are shown below. ड्रॉ भी कर देता हूं. State/construct the gravitational field lines for each of these masses. ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं. So you have two equal masses, but they are of different radii. डायग्राम पहले देख लेना. So ठीक है, मैंने एक फर्स्ट वाला मास बना दिया, दूसरा मैंने एक सेकंड वाला मास बना दिया है. So they both are of equal values in terms of their masses, but there is a difference in the radii. So how would the gravitational field lines look like? Explanation पहले देख लो, फिर मैं construction कर लेता हूं. So based on G is equal to Gm upon R square, G is inversely proportional to R square. Therefore, if R decreases, gravitational field strength will increase. Hence, the field lines in B ठीक है, वर्डिंग्स आप लोग देख लो. मैंने स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं, तो आई थिंक आप रिव्यू कर लो वर्डिंग्स को. मैं तब तक डायग्राम की कंपाइलेशन कर लूं. Remember the field lines were supposed to point inwards. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था. ए का बी के साथ कंपैरिजन कर लीजिएगा. और वर्डिंग्स के साथ डायग्राम को मैच कर लो. ठीक है, so the fact that G is inversely proportional to R square implies, बाकी की वर्डिंग्स मैंने लिख दी है, जिसका रेडियस स्मॉलर होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी. Hence the field lines in P will be more concentrated / close together as shown. हाँ हुजैफा, मैंने देखा है and I liked it. फर्दर आगे मूव करते हैं यार, स्क्रॉल अप करता जा रहा हूं. So एक और देख लो यार डायग्राम. Two identical masses are shown below. डायग्राम देख लेना. The first one is labeled as A. The second one is labeled as B. They are both identical. State one similarity and one difference between the gravitational field lines. ठीक है, तो जरा दोनों डायग्राम्स को देख लीजिएगा. Two identical masses are shown below. They are labeled as A and B. Similarity, I believe आप लोग खुद ही justify कर लोगे. So in terms of similarity, in both cases, the field lines will point inwards due to attractive nature
और आई थिंक डिफरेंस भी आप लोग शायद डायग्राम को देख के स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सो सिमिलैरिटी तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है कि दोनों केसेस के अंदर द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू पॉइंट इनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स the source mass due to the attractive nature. Difference would be in A, the gravitational field strength is uniform at every point on the surface of A, whereas in B, the gravitational field strength varies in strength at all points on the surface owing to a difference in the value of R. ठीक है, वर्डिंग इसकी भी देख लेना। हाँ, अली ने सही लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो मैंने वर्डिंग में इस चीज को इंक्लूड कर दिया है कि इन ए द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस, whereas in B the gravitational field strength varies in strength at all points on the surface owing to a difference in the value of R due to non-uniformity in the shape. Further आगे मूव कर रहा हूं। Next, working in theory, how to calculate the gravitational field strength at any point on the surface of a planet. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कैसे करना है at any point on the surface of a planet. डायग्राम पहले देख लो। Let's suppose फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको अर्थ गिवन है and the question says that the value of G on the surface of Earth is rounded off and given to you as 10. ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर the value of G on the surface of Earth is given to you, that in this case is 10 meters per second square. सेकेंड डायग्राम के अंदर ठीक है, there is another planet, इसको X करके लेबल कर देता हूं, and the value of G on the surface of this planet is unknown. G की वैल्यू को for this planet X फाइंड करना है। ठीक है, the question gives the following information. Information देख लेना। It is given that the density of Earth is 5 times the density of planet X. ठीक है, so the question is asking you to figure out कि planet X के surface के ऊपर G की वैल्यू वर्कआउट करके निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो how would we go about doing this calculation, वो देख लेते हैं। डेंसिटी का रेशियो गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो let's start with the basic formula. So apply the formula G is equal to gm upon r square. ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? लेट मी बाइफिकेट दिस वर्किंग इनटू टू पोर्शंस। तो पहले मैं अर्थ के लिए अप्लाई करता हूं,
और साइड बाय साइड इफ आई गेट इनफ स्पेस तो इसी के साथ में प्लैनेट एक्स के लिए भी कर लेते हैं। अब फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं तो आप जरा मेरी वर्किंग के स्टेप्स देख लीजिएगा कि मैं फॉर्मूले को अप्लाई कैसे कर रहा हूं। ठीक है, सो फॉर अर्थ दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग इट डाउन। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ फॉर द अर्थ, आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला रिटन एट द टॉप, लेकिन सिंबल जरा प्लीज केयरफुली देख लीजिएगा। रोहिल ने लिखा है मास इज ऑल्सो 5 टाइम्स। रोहिल, मास को 5 टाइम्स होने के लिए जरूरी होगा कि मैं ये कहूं कि द वॉल्यूम इज द सेम। So I have not mentioned anything regarding the volume, so we cannot conclude कि density 5 times है तो mass भी 5 times होगा। ठीक है, because for that to happen, the volume must be identical, which is not stated in this question. All right, कैसे working करनी है वो देख लें। So for Earth, this is how the symbolic representation should look like. पहले जरा symbols देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, और अगर आपको planet X के लिए करना हो तो फिर आपके symbols ये बन जाएंगे। मैं दोनों की वर्किंग साइड बाय साइड कर रहा हूं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस, mass can be replaced by the term density into volume. ठीक है, तो मैंने मास की जगह रिप्लेस करके डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, वो आप जरा फॉलो कर लीजिएगा। चाहिए हो तो बाद में बॉक्स बना दूंगा। लेट मी जस्ट प्रोसीड ऑन फर्दर। इफ यू सिंप्लीफाई यू विल एंड अप गेटिंग दिस आंसर। दिस वर्क्स आउट टू बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको डेंसिटी के साथ साथ रेडियस की इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं ताकि वर्किंग आगे कंटिन्यू हो जाए। तो डेंसिटी की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, और साथ में रेडियस की भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन इज गिवन, द इंफॉर्मेशन फॉर द रेडियस इज आल्सो गिवन। आगे चाहिए होंगी ये सारी इंफॉर्मेशन, सो आई यूज देम। सो फॉर द टाइम बीइंग आई हैव कंस्ट्रक्टेड माय फर्स्ट इक्वेशन। अब प्लैनेट एक्स की वर्किंग देख लीजिएगा। आई विल डू द एग्जैक्ट सेम वर्किंग फॉर प्लैनेट एक्स। कैपिटल जी कॉपी कर लिया। मास कैन बी रिप्लेस बाय द टर्म डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सिंबल्स प्लीज देख लीजिएगा। डिवाइडेड बाय, ठीक है, दोनों जगह मास हैज बीन रिप्लेस बाय द टर्म वॉल्यूम। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस लीड्स टू द सेकंड इक्वेशन। Let's call this as equation number 2. ठीक है, now I have two results to work around with. अगला स्टेप ये कर देता हूं, let's divide the two equations. Since equations आपके सामने appear हो रही है ना, तो डिविजन का काम आप जरा देख लें। This should be your final answer. Gravitational field strength for Earth divided by gravitational field strength for the planet X. जो कैंसिल हो जाएगा ना वो आप सब कुछ कैंसिल कर दें, जो लेफ्ट ओवर बच जाएगा मैं सिर्फ वो लिख देता हूं। These are the only terms जो बाकी बचेंगे। Everything else tends to get cancelled out. I guess आप कंपेयर करके देख लें। मैंने कैंसिल वाले टर्म्स को इग्नोर कर दिया है, सो आई डोंट नीड टू राइट देम डाउन। ठीक है, तो इफ यू डिवाइड द टू इक्वेशंस आपका रिजल्ट ये बन जाएगा।
आई गेस अली आपका आंसर शायद सही है, मैं भी चेक कर लेता हूं, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि शायद सही लिखा हुआ है, अभी देख लेते हैं नॉनदलेस। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी यार, ठीक है, दिस वैल्यू वाज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन 10। प्लैनेट एक्स के लिए आपको फाइंड आउट करनी थी, तो ये अननोन है। डेंसिटी का रेशियो आपको गिवन था, जरा प्लीज टॉपर से चेक कर लीजिएगा, आपको रेशियो मिल जाएगा। टॉप से देख लीजिएगा, आई गेस रेशियो आपको मिल जाएगा। रेडियस का भी रेशियो जरा प्लीज टॉपर से चेक कर लीजिएगा, आई गेस वो भी अवेलेबल है। नंबर्स मैंने प्लग इन कर दिए हैं। अली ने आई थिंक सिंप्लीफाई कर दिया था, अली ने फाइनल आंसर भी सजेस्ट कर दिया था, वो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, सो द आइडिया वाज कि अगर मासेस गिवन ना हो, और मासेस के बजाय इफ दे गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेंसिटी एंड रिगार्डिंग द रेडियस, देन रिप्लेस द मास by the term mass can be replaced by the term density into volume. Let me just write that over here as well. The mass can be replaced by the term density into volume, and then approach like the way we have done in this particular example. Right? So Ali is right. Okay, the difference between the gravitational field strength is working out to be of exactly 10 times, because for planet Earth it was 10, and for planet X it is working out to be 1. So for planet X, the gravitational field strength is 1/10 as compared to that of the Earth. ठीक है, further आगे proceed कर रहा हूँ. Next working, reasons for variation in the gravitational field strength on the equator versus at the pole. उमर, मैंने R का रेशियो दिया हुआ था बेटा, so let me go back. और उमर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, so मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको डेंसिटी का भी रेशियो दिया हुआ था, मैं ब्लू वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस का रेशियो भी दिया हुआ था. ठीक है, सो डेंसिटी और रेडियस दोनों का रेशियो गिवन था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी वर सपोज्ड टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ जी. उमर, मुझे एक एक्नॉलेजमेंट का ओके कर देना ताकि मैं आगे प्रोसीड कर जाऊं और ये अंडरलाइन टर्म्स को मिटा दूं. जी मेरे भाई उमर भाई. कहाँ रह गया उमर भाई? हम इंतजार कर रहे हैं उमर तेरा, ओके कर दे तो मैं प्रोसीड कर लूं. इसका कनेक्शन तो ड्रॉप नहीं हो गया? तो नहीं लगती है, अनलेस कि अपनी जिंदगी की कहानी मुझे सुना रहा है तो अलग बात है. लेट मी सी. आई गेस उमर भाई, हाँ उमर पता नहीं कहाँ चले गए. चलो, हाँ आई गेस वो बेचारा अब नाराज हो गया. हाँ, ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ. आज तो बारिश नहीं हो रही रायन वैसे, या हो सकता है हो भी रही हो यार. चलो मूविंग ऑन. सो एज आई वाज सेइंग, रीजंस फॉर वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अच्छा, मे भी शायद हो रही हो. इट जस्ट स्टार्टेड pouring like crazy. Which area do you live in, Ryan? Gulshan? North, okay.
ओके हाँ आई थिंक नॉर्थ में तो कल भी बहुत हुई थी. So reasons for the variation in the gravitation field strength on the equator versus at the poles. So diagram पहले देख लीजिएगा, just a basic idea. If I were to position an object, माशाल्लाह सर्कल अच्छा बना है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है. If I were to position an object on the equator, ठीक है, तो ये मैं assume कर लेता हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे रखा हुआ, EQ लिख देता हूं. The mass of the object can be taken as 1 kilogram, for example. ठीक है, and then if I were to position the same mass, the exact same mass at the poles. ठीक है, तो poles के ऊपर the exact same mass of 1 kilogram is now positioned. ठीक है, the idea would be that there is going to be a variation in the value of the gravitation field strength at the equator versus at the poles. So let's quickly discuss what could be the various different reasons that can cause a variation in the value of G when an object is positioned on the Earth's equator versus when the object is positioned at the poles. So यार कौन से factors है ना, जरा quickly इनको discuss कर लेते हैं. The first factor जो शायद सबसे relevant factor है in terms of geography, Earth is not a perfect sphere. ठीक है, so basically radius vary करता है, consequently आपकी G की वैल्यू भी वेरी करेगी. So that kind of makes sense. पहला रीजन तो ये हो गया. हाँ जी, जो यजदान ने लिखा हुआ है. ओके थैंक यू आयशा, उसने आई थिंक माशाल्लाह लिखा है. नजर तो लग जाएगी वैसे यार, कभी कभी बनता है, बोर्ड पे अच्छा बनता था यार. सेकंड वाला पॉइंट, देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of mass within the core of the earth. है ना, अब इसको भी जरा जस्टिफाई कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का क्या रोल होगा. तो अगेन इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला G is equal to Gm upon R square. So I guess on the basis of the formula you can recognize कि अगर मास की डिस्ट्रीब्यूशन is non-uniform, then surely this would cause a variation in the value of G. ठीक है, so non-uniform distribution of mass within the core of the earth. So due to Umar is back. हाँ Umar, we guys were looking for you. Umar, मैंने कहा था that information was given in the question. So मैंने आपको आंसर दिया था, लेकिन I did notice कि आप गायब हो गए थे. So Umar, the information regarding the density and the information regarding the radius, they were both provided in the question. If you want, I can go back. Otherwise, मुझे okay का acknowledgement कर दो. तो radius भी given था बेटा, और density का ratio was also given in the question. If you want, I can scroll back. Just let me know. फिर मैं proceed करता हूँ बेटा. All right, thank you. Power out. सही है. हाँ, I got the idea कि वो हुआ होगा. Because that is when I found out कि इस वक्त बारिश हो रही है. Because I had a feeling कि शायद आज बारिश नहीं हो रही. Anyways, further on. थर्ड वाला फैक्टर देख लेते हैं.